हेलो स्टूडेंट। हम लोग हेलो एल्केन्स स्टार्ट किए थे। हेलो एल्केन्स में हम लोग क्या क्या किए ना, उसका जनरल आइडिया किए, प्रिपरेशन किए, फिजिकल प्रॉपर्टी, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एंड फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट ऑन द SN1 SN2। और एक तो क्लास हम ऑलरेडी लिए हैं लेकिन अभी तक नहीं छोड़े हैं, दैट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो आज हम छोड़ देंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने का बाद हम लोग का आता है केमिकल रिएक्शन। कौन सा आता है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। देखो हम लोग केमिकल रिएक्शन का एक तो पार्ट ऑलरेडी कर लिए, कहां पे? SN1 एंड SN2 में सब्स्टिट्यूशन। जनरली मैक्सिमम रिएक्शन इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब मेरा क्या था ना, RX था, इसमें मैं लिया न्यूक्लियोफाइल, X को हटा के RNU प्लस X माइनस, दैट इज द लिविंग ग्रुप, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द सबस्टेंस, लिविंग ग्रुप लीव फ्रॉम द सबस्टेंस। तो कोई भी रिएजेंट में कौन सा उसका न्यूक्लियोफाइल है, उस रीजन से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मुझको मिलेगा, ये हमको पता हो जाएगा। तो कुछ नहीं, सिंपल खाली लिविंग ग्रुप को हटा के उस जगह पे न्यूक्लियोफाइल को बैठा देना है। तो एक एक करके हम लोग इस टाइप का देखो एग्जांपल लेते हैं। एक्स्ट्रा टू एग्जांपल हाइड्रोक्सिल को ना, एल्किल हैलाइड प्लस MOH। MOH मतलब KOH भी हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हीट। तो व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस। तो X is replaced by ROH plus MX। देखो मैं किसी जगह पे X क्या है नहीं लिखा, X हेलोजन हो सकता है, R क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है, उससे मुझको कुछ लेना देना नहीं है। मैं R का जगह मुझको बैठा दूंगा तो मैं इधर मैं ही रहूंगा। मैं R का जगह काव बैठा दूंगा, काव Cl लिखूंगा, तो मुझको क्या मिलेगा? काव OH। मैं सब बच्चे को ऐसे ही बोलता हूं। तो जनरल सिंपल व्हाट इज द चेंज? X इज रिप्लेस बाय OH, खत्म, और कुछ करने का जरूरत नहीं। अगेन नंबर 2, मैं इसको जनरल रखता हूं। नंबर 2, RX NaOR डैश प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एंड हीट, क्या मिलेगा यार? RX X is replaced by OR dash, that is the nucleophile, that is the nucleophile। तो ROR dash, that is the ether। तुम R dash छोड़ के R भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तुम क्या लिए? NaOR, तो क्या मिलेगा मुझको? ROR, both are same, that is also ether, that is called simple ether, that is called mixed ether। Okay, तो what is the nucleophile? OR dash। Again number 3, RX plus KCN, what is the nucleophile? CN minus, we are get RCN। तो साइड प्रोडक्ट मुझको उतना ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है, RCN। then along with KX, cyanide is the nucleophile। but if we are RX plus AgCN, then we are get RNC plus AgX, that is the interesting। when we are take KCN, we are get RCN। when we are take AgCN, we are get NC। Sir, both are same, that is only difference in a potassium and Ag। that is due to nature of the nucleophile, it is called, already discussed, ambidentate nucleophile। it is exist as that form and that form। when we attack through KCl or when we use KCl, it is attacked by that form। when we take AgCN, that is attacked by that form। That means
If we take KCl, then it is more stable. If we take AgCl, that form is more stable. मतलब more stable form when take KCl and more stable form when take AgCl. इंटरेस्टिंग चीज क्या पे ना, इसमें क्या होता है, ए रिएक्शन when take KCl attack to SN1 mechanism and it is AgCl में SN2 mechanism. ना इसमें क्या होता है, KCl लेने से SN1 टू जाएगा, AgCl लेने से SN2 जाएगा ना. पोटेशियम आयोडाइड इजीली X को रिप्लेस करेगा, एक कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, और कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा तो कार्बोकेटायन को अटैक करेगा कौन, हाईली रिच न्यूक्लियोफाइल, तो उससे होगा. ठीक, ये गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट. मोर स्टेबल लेस स्टेबल करके भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 Rx plus KNO2 Rx plus AgNO2 RNO2 RONO. That means NO2 is a ambidentate nucleophile. It is attacked through O, it is also attacked through nitrogen, already discussed. So if we are take KNO2, it is attacked through nitrogen. If we are take AgNO2, it is attacked through oxygen. तो दोनों ही प्रोडक्ट मिलेगा इसमें, इसमें भी RONO मिलेगा, इसमें भी RNO2 मिलेगा, बट दैट इज द मेजर इन केस ऑफ दैट इज द मेजर. ठीक, तो ए गया सब्स्टिट्यूशन बाय एम्बिडेंटेड, दोनों एग्जांपल. नंबर 7 RX plus RCOOAG. What is the nucleophile? Attack बाहर. तुम इसको दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हो. इसको आर्डेस्ट लेगा तो ए वाला आर्डेस्ट, इसको आर लेगा, इसको आर्डेस्ट लेगा तब ए आर्डेस्ट, नो प्रॉब्लम. सिमिलर भी ले सकते हो, डिफरेंस भी ले सकते हो. तो ए हम लोग का एसिड कार्बोक्सिलेट आयन, और 8 एमोनिया, RX प्लस एमोनिया RNH2. Primary RNH2 in presence of ethanol and heat. In presence of ethanol heat, we are again ammonia, again replace. Take again RX RNHR, again RX RNRR, again RX RNRRR plus. Primary amine, secondary amine, tertiary amine, quaternary salt. So when alkyl halide substituted by ammonia, we are get mixture of product that is called Hofmann aminolysis. Hofmann aminolysis. So that is not a good process for preparation of 1 degree, 2 degree and 3 degree. Why? Because by the Hofmann aminolysis process, when we are prepare amine, we are get mixture of ammonia 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. They are having more or less boiling point. So by fractional distillation,
we are cannot separate the amine. So it is not a good process for preparation of amine. Okay. Number 9, very important. Rx plus CH triple bond C minus Na plus. Very important. Now, that is the nucleophile. CH triple bond Cr. That means that is the acetylene. Acetylene का हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एल्किल ग्रुप. हाइड्रोजन मतलब सब्स्टिट्यूटेड ऑफ एल्काइन. Substituted of alkyne. At first, we take the strong base NaNH2 liquid ammonia that is converted to salt CH triple bond C minus Na plus. Then we are take Rx CH3Cl. Then we get CH triple bond C CH3. Again NaNH2 liquid ammonia. Again C triple bond C CH3 minus again Rx. sorry इधर Rx लिखा है, CH3 लिख रहा हूं, सॉरी. लिक्विड एमोनिया, नो प्रॉब्लम. ReCH3 C2H2 कुछ भी हो सकता है. Then we are get RC triple bond Cr. So if we are increase the alkyl group in a alkyne, then we are using this method. It is the importance for increase of number of carbon in a alkyne or substitution reaction. Okay, that is the substitution reaction. Or substitution reaction, halogen action, already discussed in a preparation. Halogen action, Schwarz reaction, Finkelstein reaction, that is also halogen action reaction. And last one, preparation of alkene, that is preparation of alkene, Rx converted to RH. So if we are take CH3Cl, it is converted to CH4. So we are take lithium aluminum hydride, reducing agent, that is called reducing agent. ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग डाल देंगे तो एल्किल हैलाइड कन्वर्टेड टू एल्केन. ठीक, तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन. अभी आ रहा है हम लोग का मतलब, मैं जो बार बार बोला हूं, ये RX एक से केमिस्ट्री सर, फिजिक्स सर पहुंच गया, केमिस्ट्री सर भागा, फिजिक्स सर बैठ गया तुमको पढ़ाने के लिए. ओके, तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो रहा है, which reagent given which nucleophile, then it is easy. Only living group replaced by nucleophile or nothing. So must be remember which reagent gives which types of nucleophile. The reaction is simple. चलो, अभी we are discussing the elimination reaction. We are discussing the elimination reaction. New idea. It is just like to reverse of substitution. Substitution में क्या हुआ था? Substitution में एक को हटा के एक, replace by one by another. But in case of elimination, both are eliminated. As for example, if we take the example CH2H CH2X, in case of substitution X is replaced by nucleophile, but in case of elimination we are eliminated, then we are get that is
reverse of addition reaction. Addition reaction, in case of addition, double bond convert, double bond or triple bond converted to single bond or double bond or single bond. But in case of elimination, single bond converted to double bond or triple bond. Okay, मतलब that 1, 2 or 2, 4 valency, 1, 2 or 2, 4 valency. मतलब that means H. That means H. All are having tetravalency carbon. But if we are remove that, one, two, three, so tetravalency fulfilled by double bond. That is the elimination. That is the elimination reaction. ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग एलिमिनेट ऑफ द एटम्स और ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट इन एडजेसेंट कार्बन. जो एलिमिनेटेड हो रहा है वो दोनों एडजेसेंट कार्बन में अटैच होना चाहिए. अदरवाइज ये हेलोजन इस जगह पे कार्बन है, नॉट रिप्लेसन में, इससे नहीं होगा. ओके, तो दैट इज द एलिमिनेशन. If we take the example, CH3, CH double bond, CH2, Cl. What is the reagent? KOH, ethanol. KOH, ethanol. What is the product? Now that is the halogen and adjacent carbon is that. So halogen or adjacent carbon hydrogen eliminated. We are get CH3, CH double bond CH2. That is, if we write as written as, then that is the product. That is called elimination. Okay, as for example, but if we are take CH3, CH2, CHCl, CH3, then we are eliminated chlorine and that hydrogen. So we are get CH3, CH2, CH double bond CH2. Again, in the first case, we are eliminated that halogen and that hydrogen. That is also adjacent hydrogen. So it is also eliminated. So we are get in case of that substrate, we are getting two products. Because in case of halogen, in case of elimination, eliminated atom must be present at the adjacent carbon. So that is the halogen, that is the hydrogen. There are also opportunities, that is the halogen, that is the hydrogen. But here only one opportunity. That side having no eliminated hydrogen. That side having no carbon, which having a hydrogen. So which product is major product? For that rule is coming. Sedgwick rule. In case of elimination reaction, if we are get two product, then more substituted product is major product. More substituted product means
more substituted product means जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट एल्किन, जिस एल्किन में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हाई, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट. तो दैट इज द एल्किन एंड दैट द कार्बन which are having a double bond. So that carbon having substituted group only one. That side 2 hydrogen, that side 1 hydrogen. So 3 hydrogen. Normally 4 hydrogen. CH2 double bond CH2. Hydrogen shortage, substituted group increase. Numbers of hydrogen shortage, number of substituted group. So number of hydrogen shortage 2 or 1, 3 present, 1 shortage. So that is the substituted group. In case of that substituted double bond carbon, that one and that one, having hydrogen 1 and 1, 2, actually 4 hydrogen, but shortage 2. So that is the substituted, that is the substituted. So here 2 substituted, here 1 substituted. So that is the major product according to Selzniak rule. Okay, so if the alkyl halide proceed to elimination and give a more than one product during the elimination reaction, then more substituted alkene is major product. मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हमको कैसे समझ में आएगा, मैं बार बार एक चीज सिखा रहा हूं, दैट इज द डबल बॉन्ड. Generally 4 hydrogen is present. If we take CH3, CH double bond CH2, only 1 substituted. If we take CH3, CH double bond CH, CH3, 2 substituted. If we take CH3, CH2, CH double bond CH2, 2 substituted? No. That is also 1 substituted. Because hydrogen 2 or 1, 3. So shortage 1 from 4. Shortage 1 and 2. That hydrogen not considered. Only double bond connected carbon. We are only discuss double bond connected. We are only discuss double bond connected carbon. We are only discuss double bond connected carbon. Double bond connected carbon considering, not other carbon. Okay, so that is the Selzniak rule. But here chlorine is a good living group, but living group is not a good living group. Then that is the major, that is the minor. That rule is called Hammond rule. So there is 2 rules. One is Selzniak rule, applicable for good living group. We are get more substituted alkene. In case of Hammond, applicable for less or bad living group. Bad living group. Product is less substituted. So here we take chlorine or iodine are good living group because living nature is fluorine, chlorine, bromine, iodine. If iodine or chlorine or bromine, good living group. If we take fluorine, then we have discussed the Hammond rule. So it is a minor, it is a major. Very, very interesting. Okay, that is the Selzniak rule and Hammond rule. Clear? So that is elimination reaction. Then we have discussed the type of reaction. कहां पे भी दिक्कत होगा मस्ट भी मुझको कमेंट.
So then we discuss number 3 type, reaction with metal. Generally, alkyl halide reaction with metal given organometallic compound. Organometallic compounds. Organometallic compound means that is RMGX. Organic compound along with metal. Organic compound along with metal. Generally, that is called alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. If we take CH3MgBr, that is also alkyl magnesium halide. Generally, that reagent known as Grignard reagent. Methyl magnesium bromide, that is type of alkyl magnesium halide. Specially, Grignard work with it, CH3MgBr. So it is specially called Grignard reagent. Methyl magnesium bromide. ठीक, interesting चीज, that is negative part, act as a nucleophile, and that is positive part. Generally, in a molecules or in a substrate, first part is the positive, but in case of organometallic or Grignard reagent, that is the negative and that is the positive. Very, very interesting. For that, it is act as nucleophile. It is a good nucleophile. Act as a good nucleophile. So Grignard reagent is a act as good nucleophile. Grignard रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स और जो हम लोग का सिलेबस में है सब कुछ हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Grignard बाय यूजिंग डिफरेंट सब्सटेंस. तो इस क्लास थोड़ा भास्ट हो जाएगा बोल के मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. आज के लिए इतना. अच्छा लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट क्लास में हम अगेन लेके आएंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. थैंक यू यार.